Welcome to our educational academy. Our today's course is about basic electrical engineering. As in the last lecture we discussed the electric circuit theory, and also we discussed electric circuit, elements of circuit, and also we discussed its application and importance. We also discussed its application and importance. Our today's topic is, we will know that before going to this electric circuit theory or before going to basic electrical engineering, we will learn the basic concepts. Basic concept means the base of electrical engineering. Those are those basic topics which are important for the electrical engineering. Like in these, we will learn about the electric charge, current, voltage, the circuit elements, what are included in the circuit elements, power and energy. These are those basic tools for the electrical engineering which are used all the time. So first we will learn these basic concepts. In order to learn these basic concepts, we have to make a system or a language which can be understood by everyone. इसी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लैंग्वेज बनाएंगे, एक यूनिट सिस्टम बनाएंगे, ताकि जो भी हम क्वांटिटीज़ में ले लें, जो भी हम बेस कंसेप्ट ले लें, ताकि उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम लैंग्वेज हो, फिर हम इसको यूज़ करके. फॉर देट वी यूज़ अ सिस्टम. सो वी establish a system of units, or it can be called a language, because this is the only way that we can understand each and every quantity. So that we will make this language in order to understand all the basic concepts. So this will be our target, that we will understand the basic concept through these. Now we will move towards the system that we are going to make and analyze what we will make in this. First we will make a system. Here we will discuss the system of units. This is the language that we will make. It is established to understand all these concepts. In other words, that this is a communication between the professionals that could understand each and every base concept. So in order to measure these quantities, इन क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हम फिर ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि सारे प्रोफेशनल्स इनको अंडरस्टैंड कर सकें. इसी वजह से फिर हम एक सिस्टम बनाते हैं, यूनिट ऑफ सिस्टम. सो वी establish for the measurement of quantities को मेजर करने के लिए हम ये सिस्टम बनाते हैं. For quantities that all professionals
could understand it, that all professionals can understand this standard language that is communicated between them. So it is a communication between communication in standard way. This is a kind of standard way that each and every professionals can understand this language. So for this, an international system of unit is made, which is an international measurement language. For this international system of units was made. International system of units was made. So this was called named as SI. SI means SI system or SI language. This is a language. So for this, इसी के लिए फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया वेट एंड मायर्स में। तो उसी कॉन्फ्रेंस पे एक डिसीजन हुआ कि हम एक ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल बनाएंगे जो पूरे क्वांटिटीज़ के लिए एक ख़ास सिस्टम होगा, पूरी दुनिया के लिए फिर वही अडॉप्टेड होगा। इट वाज अकर्ड इन 1960 में ऑन वेट एंड मायर्स के लिए फिर एक ऑन वेट एंड मायर्स देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस था, उसी में ये डिसीजन हुआ मेड दैट द SI unit system will be made throughout the world to understand each quantity को अंडरस्टैंड के लिए यही सिस्टम बनाया गया। तो इसीलिए फिर हम ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि वाकई ये सिस्टम क्यों फ़ायदेमंद है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को। अभी हम आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको फिर SI सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल इसको कहते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, whatever you call it, it is. So this is an international measurement language. Through this you can find the quantities those are to be measured. That's why we use this international language. It is an international measurement language. So what will be its usage, or what is its effect on the quantities? Through this you can measure all quantities in the nature. It consists of 7 basic quantities through which we can find all the derived quantities. From these basic quantities, from 7 basic quantities, you can derive other quantities. इसी से फिर हम मुख्तलिफ और क्वांटिटीज़ इसी से फिर आख़ज़ करते हैं। तो यही 7 बेस क्वांटिटीज़ है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज़ करते हैं।
अभी एक फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ को कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है या anything, any quantity that can be measured, quantity that can be measured, so that is called the physical quantity. So now we'll move towards the basic 7 physical quantities. Basic 7 physical quantities or the basic 7 physical quantities or basic units. Basic units. There is the SI units. So we will discuss this. The basic SI units. So now number 1 it is time. Number 2, the time unit is second. It is represented by S. Okay, the second is length. So the length unit is meter. Now we will write all the units in the after. Third is mass. Fourth is current. The fifth is temperature. You can say is temperature. Now the seventh is the sixth is the sixth will be called the intensity of light. Intensity of light. Now the seventh will be amount of substance. This is important. Amount of all are important substance. So these are the units. The length unit is meter, represented by M. The mass unit is kilogram. It is kg. The current unit is ampere. It is by A. The temperature unit is Kelvin. By K. Intensity of light unit is candela. By CD, and the amount of substance is mole. By MOL. These are the basic 7. Now all other quantities can be derived. All other quantities can be derived from these basic quantities. Can be derived from these basic quantities. इसी बेसिक क्वांटिटी से फिर बाकी सारे क्वांटिटीज़ वो डेराइव हो सकते हैं. तो इसी वजह से ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया ताकि हर किसी को इसका समझ आ जाए कि सिस्टम इंटरनेशनल किस चीज़ को हम कहते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल किस वजह से बनाया गया. इसी वजह से ताकि दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज़ है उनको हम मेजर कर सकें. इसी वजह से फिर हम लोगों ने यही सिस्टम इंटरनेशनल बनाया. सिस्टम इंटरनेशनल में फिर फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको हम मेजर कर सकें. वो क्वांटिटी जिसको हम जिसकी पे मेजर हो सके उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. 7 बेस क्वांटिटीज है: टाइम, लेंथ, मास, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. So this is the international system of units. It's really important that first, before going to basic electrical engineering, we must learn these topics to understand the base. Then we will be able to understand each and every topic clear. So now advantage of SI सिस्टम इंटरनेशनल का फ़ायदा क्या है. इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों इस चीज़ को पढ़ते हैं.
यानी हमने क्यों ये चीज़ बनाया। इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि ये रिलेट करता है स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी यूनिट्स को प्रीफिक्सेस के ज़रिए एक बेसिक यूनिट्स की तरफ, यानी एक लार्ज या स्मॉल क्वांटिटी यूनिट्स को प्रीफिक्सेस के ज़रिए हम इसको बेसिक यूनिट्स में तब्दील करते हैं। इसका ग्रेट एडवांटेज ये है, ठीक है। तो इट्स advantage is that very small or very large, a very small or very large units are related using prefixes को यूज़ करते हुए हम इनको रिलेट करते हैं टू बेसिक यूनिट्स, ठीक है। बेसिक यूनिट्स यानी बेसिक यूनिट्स से हम इनको रिलेट करें, इसी वजह से इसका बड़ा इंपॉर्टेंस यही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर एजुकेशनल अकेडमी। वॉच मोर वीडियोस टू अंडरस्टैंड and increase your knowledge, improve your understandings in the electrical engineering. Watch our more videos, subscribe our channel. Thank you.